Your problem is the one thing that you don't know that I'm going to tell you about the all-new Santro. My problem is which language to speak in. To meet your problem, we're going to Bhubaneswar. To meet my problem, You have to meet me. तो आइए मिलते हैं। हिंदी में मेरा नाम रोहन अलबल और अंग्रेजी में टेन हट। एक ऐसा शख्स जो हिंदी बोले तो लोग हेट कमेंट्स छोड़ जाते हैं, अंग्रेजी बोले तो लोग कहते हैं कि भीख की दी हुई लैंग्वेज बोल रहा है। सच कहूं तो हम सब भीख की दी हुई जिंदगी ही जी रहे हैं। डीप है, और अगर खिड़की से बाहर बने पोल्यूशन को देखा जाए तो और भी डीप है। जिंदगी भीख की और साथ सस्ती। बस ये होटल बड़ी नहीं है। पहुंच गए भुवनेश्वर। वाह, कितना महंगा और सच्चा है ये हाथी। अजीब सी बात है, जब भी कोई मार्केट में गाड़ी लॉन्च होती है ना, तो उसका मैन्युफैक्चरर मुझे अपने टेस्ट ड्राइव पे बुला लेता है। ऐसा हमेशा होता है। पैसों के लिए मैं झूठ नहीं बोलता और सच बोलने के मैं पैसे नहीं लेता। बस मैन्युफैक्चरर ने दिया हुआ खाना मैं बहुत खाता हूँ, क्योंकि मुझे हक्का नूडल्स बहुत पसंद है। अब इसका कोई हिंदी नाम नहीं तो इंग्लिश ही सही, हक्का नूडल्स। बट इफ वी आर टू स्पीक इंग्लिश, देन लेट्स गेट बैक टू द कार सेंटर। then back to where we started, which is right beside this car out here. Now, till now I've been using my phone camera in my hand, or GoPro camera as my language. Well, cause the best camera is the one on you. But now that the intro is over, now that the first drive begins, the best camera on me is this man here. कैमरा तो बदल दिया, what would my language be? Okay, I think I have a few options. Let's try them out, yeah? So let's start with option 1. Option 1. I could put my mouth into the forms of saying that the all-new Santro here is India's favorite family car. But then a line like this would probably mean nothing to you, even if you were to read it in a magazine. No, yaar, option 1 is not working, no. No. Okay, let's do option 2. Option 2, all right? इसमें मैं बात करूँगा, ये थोड़ा देसी है, मतलब तंदूरी जैसा। इसमें मैं गाड़ी के बगल में खड़ा रहूँगा और इसके एवरेज माइलेज और कीमत की बात करूँगा बिना गाड़ी चलाए। तो दोस्तों आइए मिलते हैं दी ऑल न्यू सेंट्रो को। इसके बारे में आज हम बात करेंगे जैसे ये है कोई कहानी जिसका स्वाद है हिंदुस्तानी। नहीं, बट ऐसे तो कोई बात ही नहीं करता है, तो हिंदी डजंट वर्क। ओके, ऑप्शन 3, लैंग्वेज को मारो गोली, Hyundai Santro को मैं गाऊंगा। एक्शन। Oh yeah, that's right. For sure. Represent. हो सकता है ये है पुरानी इंजन की iteration. That's right. But ना है gear, lever, accelerator, steering पे कोई vibration. Now it doesn't make a lot of power, but है enough thumb in the acceleration. The AMD is intelligent and the torques drop in like the process of natural selection. Manual का clutch है light, मतलब traffic में no tension. The ride quality is great and the all new Santro feels like redemption. Enjoy कीजिए Santro. That's right. Oh yeah. For sure. Represent. गाने में भी मजा नहीं आया। असल में मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने पुरानी सैंट्रो को याद नहीं किया। इतने सारे लोग ऑल न्यू सैंट्रो के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं, भूलना होगा। भूल जाओ। So भूल जाओ। Yeah, भूल जाओ अखबार, मैगजीन और टीवी को। भूल जाओ उस नाम को, तुम्हारी टीनेज क्रश को। उसको जो इस गाड़ी में स्कूल आती थी। भूल जाओ द गर्ल नेक्स्ट डोर को। और याद करो नहीं और किसी की, सिर्फ थोड़ी याद उसी की, तुम्हारी घर की वो जो फर्स्ट फैमिली कार थी। याद करो सिर्फ उसी की। फर्स्ट फैमिली कार थी, और वो इसलिए थी बिकॉज Hyundai
really understood what India needed. Today, when you talk of a Hyundai car, you come to expect a few things like premium interiors. You come to expect good ride quality, great after-sale support, very nice resale value, and whatnot. Now, sitting in here today, I could be telling you what good they have done. Like the window switches from the door are now here in the middle near the gear shift lever, so that excavates more knee room. I could be telling you what's bad, like the steering, it's not adjustable at all. No tilt, no telescoping, and the seat here, driver's seat, is not adjustable either. So how is one supposed to get into a good ergonomic driving position? But I'm here to tell you that one thing that you don't know that I'm going to tell you about the Santro. If only we could decide on the language that we should speak in. It would have been so much easier. I would have asked it already, I would have given you the answer already. But sadly, we don't know what we should speak in yet. So let's give it another try. Option 3, इस बार अंग्रेजी. Yeah. It is small but tall and it can now make calls. But the green seat belts will let the AMG designers take the fall. The sound will make you smile like Glenn with glee. Because you see, it has 4-cylinder engine while rivals offer 3. The rear seat is reclined, it gets rear AC vents, a USB port and dash पे है ये एक idle keeping dent. अब है सबकी मन की शांति 3 years and 100,000 kilometers की unlimited warranty. Now let's get asking that question here, that problem, that one thing that I told you in the beginning that I'm going to tell you about the all-new Santro. But what language? अच्छा भाई, ये गाड़ी कौन बेची दामी क्या? हमारा मतलब भैया ये गाड़ी ज्यादा महंगी है क्या? Well, that's the question. Well, now that we have finally asked the question, it's time to get serious. क्या Santro महंगी है? At 3.89 lakh rupees for base variant, well, it certainly is much more than the Tiago, but much less than the Celerio base. But then the base variant, keep in mind, of the all-new Santro is absolutely bare bones, which means it doesn't even get an air conditioner on the inside. So, क्या base variant Santro महंगी है? I wouldn't say so because it still manages to get ABS, EBD and airbag in the base variant, which means clearly Hyundai India को तुम्हारी जिंदगी सस्ती नहीं महंगी है. And if you go to talk about the top-end variants, yes, they're more expensive than the competition top-end variants, especially given the fact that the AMT transmission hasn't even made it onto the top-end variant of the new Santro yet. And when that does, it's going to cost about 6 lakh rupees. So is the Santro on the top-end Santro expensive? Well, let's put it this way. 20 years ago, when the Santro was launched in our market, it was an entry-level offering from Hyundai. Today, that's not the case. Today, it sits above the Eon. It replaces the i10 and shares a modified chassis from the Grand i10, giving you more space on the inside. You can even manage to sit 5. So, क्या Santro महंगी है? हाँ है. But does it deserve the price?